नमस्कार, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, आपका जो है ना माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ESE की फार्मूला सीरीज चल रही थी, मैथ का चल रहा था हमारा सेक्शन। आज जो है 04। चलिए देखते हैं। ये रहा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर माय डियर साथियों। मैथ 04 नाउ हम जो है अब सीरीज़ का एक्सपांसन देख लेते हैं। टेलर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलर सीरीज एक्सपांसन जिन्हें नहीं पढ़ा उनके लिए तो भाई क्या ही कह सकते हैं, वो फिर उम्दा किस्म के खिलाड़ी होंगे। फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू ए के लिए जो है हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो में ए ले लेते हैं, एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल ऑफ 2 एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस प्लस प्लस। अगर जो है हम ए को शून्य ले लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है मैक्लॉरिन सीरीज में। मीन्स मैक्लॉरिन इज ए स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोटेशन हो जाता है एफ टाइम्स जीरो प्लस एक्स ओवर दी एफ डैश ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ जीरो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस प्लस प्लस। नाउ मूविंग अहेड, साइन ओवर दी एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस 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 अप टू द इन्फिनाइट देयर इज़ अ नो लिमिट। नाउ कोस ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1 से चालू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 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 अप टू द वैल्यू ओवर दी अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट मूविंग अहेड साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल ऑफ 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल ऑफ 5 एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7, मतलब ऑड वाली टर्म्स आती हैं हाइपरबोलिक में। नाउ इवन दो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स 1 से चालू होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 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 अप टू दी इंफिनिटी। राइट, नाउ मूविंग अहेड, ई रेज टू पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस प्लस प्लस। नाउ मूविंग अहेड, ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल ऑफ 4 नाउ minus of x power 5 by factorial 5. Right, these are the expansion sum of the series. Now moving ahead, expansion आया है तो लॉगरिथमिक तो आना बनता है, दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कहो तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 डॉट 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 डॉट। नाउ मूविंग अहेड, लॉगरिथमिक ऑफ 1 माइनस एक्स का ये हो जाता है माइनस ओवर दी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल ऑफ 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4 डॉट 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 डॉट। राइट, नाउ कुछ जो है इम्पोर्टेंट हम एक्सपेंशंस देख लेते हैं। सम IMP वाले एक्सपांसन, पहला आएगा 1 माइनस
1 minus t raised to power of minus 1, which is equals to 1 plus t square plus t cube plus. Now 1 plus t का इनवर्स 1 minus t plus t square minus t cube plus t4 plus 1 minus t raised to power of minus 2, 1 plus 2t plus 3t square 4t cube plus 5t 4 plus 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है? अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता होगा क्या? 1 प्लस टी 1 माइनस टी. नाउ मूविंग अहेड 1 माइनस टी क्यूब 1 माइनस टी 1 प्लस टी का स्क्वायर मूविंग अहेड 1 माइनस टी रेज टू पावर 4 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का क्यूब. नाउ गो थ्रू फॉर मैक्सिमम मिनिमम. इसमें आप यूज करते हो सिंगल वेरिएबल. तो आपका रिलेटिव मिनिमा का केस देखते हो. मूविंग अहेड आपको क्या कंडीशन मिलती है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोर देन 0. पॉजिटिव साइन विच इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा की कंडीशन. वाइस वर्सा रिलेटिव मैक्सिमा में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0. नेगेटिव साइन विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्हाट? मैक्सिमा की कंडीशन. now point of inflection. ये होगा dy by dx is equal to 0 and d2y by dx2 is equal to 0. Now go through 5 curves. Here this kind of curve is to be generated. Here at the center point, midpoint, origin point of inflection is to be there, right? Now d cube y by dx cube is not equals to 0 वाला केस. now moving ahead, सिंगल वेरिएबल के लिए हो गया काम नाम मिनिमा एंड मैक्सिमा. फॉर दी टू वेरिएबल के लिए देखते हैं हम क्या देखने को मिलता है. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट दी del u by del x and del u over the del y. now solve del u by of del x is equal to 0 and del u by del y is equal to 0 के लिए r s t we have to watch it. r is equal to del square u del
x square, s stands for del square u by del x del y, and t stands for del square u over the del y square, right? These are the stationary point. Now we have the three imposed condition. Get set to and make a hashtag for these conditions. Now we have to looking forward to it. First one, we have the case rt minus s square is more than 0, rt minus s square is greater than 0, rt minus s square is less than 0, and rt minus s square is equal to 0. This one is our favorite one. There is a no conclusion is to be drawn. This is to be here irrelevant equals to case. If rt minus s square is more than 0 and r value is more than 0, that stationary point is to be relative minima case. Relative minima case. Rt minus s square is more than 0 and r is less than 0, then stationary point is to be relative maxima case. Relative maxima case. Rt minus s square is already less than 0, then our point of inflection at the stationary point. Right here, these are the such a brilliant equations which comparison is to be written over here. You have to keep in mind, that is much more appropriate. Now some integral section, we have some formulas are to be left over, so we will try here. Integration u times dx, multiplication formula, integration u into v times of integration dx minus integration of du over the dx, integration v dx and whole separate dx. Now it is followed by islet, inverse, logarithmic, algebra, tangent, trigonometric or exponential, right? Moving ahead, second one is minus a to a, limit over the f of x times dx, which is solved by 2 times of 0 से 2 integration fx times dx, right? And shown whether the condition of f of minus x is equal to f of x, the function is to be a even, and if f of minus x is equal to minus of fx, the condition is to be odd. So odd function के लिए हमारा जो condition जो है शून्य 0 के अधीन होता है. Now integration 0 से a fx times of dx is equal to integration of 0 से a f over the a minus of x times of dx. Now move ahead, fourth one, integration 0 से a fx over divided by f of x plus f of a minus of x is equal to a upon 2, right? Keep in mind these equations are such a brilliant execution in our integration which will help to calculate the things. Now integration 0 से 2a f of x dx. Here we have already two conditions defined. Integration 0 से a f of x dx, a f of 2a minus x f is equal to fx, then it would be satisfied. Otherwise elsewhere 0 if f of 2a minus x is equal to minus of f of x. Now the sixth one, integration
0 से a f of x multiplied with x times dx, a by 2 integration 0 से a f of x dx if f of a minus x is equal to f of x satisfied. Now moving ahead, next form, it's basically the condition of like homogeneous type. Sin raised to power nx dx is equal to integration 0 से pi by 2 cos over nx dx is equal to n minus 1 n minus 3 plus 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 up to k division over the n minus 2 n minus 4 dot dot dot. Here k varies from pi by 2 to 1, whether pi by 2 condition for the even and for the odd it is to be 1, whose value n's value. ठीक है साथियों, इतना ही अपना सेशन रखते हैं। वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे पेनिट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।